Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I seek the blessings of Bhakti Prem Maharaj and all the assembled Vaishnavas to be able to say something that will help. So this is Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, the Dynasty of Puru, text number 17. Can I sit here and They have to see you. Yeah. If they see you, they can hear you. If they don't see you, they don't hear you. So this is verse 17. Amogavirya Rajasir Mahasyam Vira Adade Swabhute Swapuram Yata Kalena Sutta Sasutam Amogya Viryo Rajasir Mahishyam Viram Adade Swabhute Swapuram Yanta Kalena Sutta Sasutam Amoga Viryo Rajasir Mahimsham Vira Adade Swabhute Swampuram Yata Kalena Sutta Satutam That word yata, although it has a dot underneath, because it's not the second and the fourth line, you don't say yataha, you say yata. It's only on the second and the fourth line that you emphasize with the dot under, because Sanskrit originally is written in 2 lines and not 4. So that's how it's understood. So if it's under the second line, which is the end of the first line, or the last line, which is the end of the second line, then you hold it, then you say yataha. Otherwise, you just read it as it is. महाराज ने बताया कि जो याता है ये तीसरी लाइन में आ रहा है, अगर दूसरी या चौथी लाइन में होता तो हम लोग याता उच्चारण करेंगे। ये जो श्लोक है वास्तव में 2 लाइन का है, हम उसको 4 लाइन में बांट करके पढ़ते हैं केवल उच्चारण के सरलता के लिए, और वास्तव में ये 2 लाइन का ही है। तो जब हम याता उच्चारण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, यात जैसे ही उच्चारण करते हैं। Thank you. Anyone else? Amogavirya Rajarshi Amogavirya Rajarshi Mahisham Viryam Adade Bhute Swapuram Yata Kalena Sutta Sasutam
कालेन सुशासितम् अमोघवीर्यो राजर्षि अमोघवीर्यो राजर्षि अमोघवीर्यो राजर्षि शोभते स्वपुरं याता कालेन सुशासितम् अमोघवीर्यो राजर्षि महिषा वीर्यमानते शोभते स्वपुरं याता कालेन सुशासितम् Ladies, अमोघवीर्यो राजर्षि महिषा वीर्यमानते शोभते स्वपुरं याता कालेन सुशासितम् अमोघवीर्यो राजर्षि महिषा वीर्यमानते शोभते स्वपुरं याता कालेन सुशासितम् अमोघवीर्यो राजर्षि महिषा वीर्यमानते शोभते स्वपुरं याता कालेन सुशासितम् Amogavirya. A person who discharges semen without being baffled. Or in other words, who must beget a child. Raja Rishi, the saintly king Dushmanta, Mahisham, into the queen Sakuntala. After her marriage, Sukuntala became the queen. Viryam, semen, Adade, placed, Swabhute, in the morning, Swapuram, to his own place, Yata, returned, Kalena, in due course of time, Asuta, gave birth, Sa, she, Sakuntala, Sutam, to a son. Translation: King Dushmanta, who never discharged semen without a result, placed his semen at night in the womb of his queen Sukuntala, and in the morning he returned to his palace. Thereafter, in due course of time, Sakuntala gave birth to a son. स्कंद 9 अध्याय 20 पुरु का वंश श्लोक 17 का अनुवाद। अमोघ वीर्य राजा दुष्मंत ने रात्रि में अपनी रानी शकुंतला के गर्भ में वीर्य स्थापित किया और प्रातः होते ही अपने महल को लौट गया। तत्पश्चात समय अनुसार शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। Text number 18. In the forest, Kavan Muni performed all the ritualistic ceremonies concerning the newborn child. Later, the boy became so powerful that he would capture a lion and play with it. श्लोक 18 अनुवाद। कण्व मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में यह बालक इतना बलवान बन गया कि वह किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ खेलता था। This is the results of good parents. अच्छे माता पिता होने से ये फल होता है। From good trees come good fruit. अच्छे पेड़ों से अच्छे फल लगते हैं। Text number 19.
Sakuntala, the best of beautiful women, along with her son, whose strength was insurmountable and who was a partial expansion of the Supreme Godhead, approached her husband Dushmanta. श्लोक 19 अनुवाद। सुंदरियों में श्रेष्ठ शकुंतला अपने पुत्र को, जो दुर्दमनीय था तथा भगवान का अंश अवतार था, अपने साथ लेकर अपने पति दुष्मंत के पास गई। Text 20. When the king refused to accept his son and wife, who were both irreproachable, an unembodied voice spoke from the sky as an omen and was heard by everyone present. श्लोक 20 अनुवाद। जब राजा ने अपनी निर्दोष पत्नी तथा पुत्र दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो आकाश से शकुन के रूप में एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, जिसे वहां उपस्थित सबों ने सुना। Purport. Maharaj Dushmanta knew that Sakuntala and the boy were his own wife and son, but because they came from outside and were unknown to the citizens, he first declined to accept them. Sakuntala, however, was so chaste that an omen from the sky declared the truth so that others could hear. When everyone heard that from the omen that Sakuntala and her child were truly the king's wife and son, the king gladly accepted them. तात्पर्य। महाराज दुष्मंत जानते थे कि शकुंतला उनकी पत्नी और छोटा बालक उनका पुत्र है, किंतु बाहर से आने और प्रजा को ज्ञान न होने से दुष्मंत ने उन्हें पहले स्वीकार नहीं किया, किंतु शकुंतला इतनी सती थी कि आकाशवाणी ने सारी सच्चाई बतला दी, जिसे दूसरे लोग सुन सके। जब सब लोगों को पता चल गया कि शकुंतला तथा उसका पुत्र राजा के ही पत्नी एवं पुत्र हैं, तो राजा ने बाद में उन्हें स्वीकार कर लिया। Om Gyantimidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine Panchakalpa Taruvishya Kripa Sindhupe Bacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gauda Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So you might ask the question, why did King Dushmanta refuse to accept his very chaste and very beautiful wife and the powerful son that was born? Question comes. तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो राजा दुष्मंत जो हैं, उन्होंने इतनी पतिव्रता अपनी पत्नी शकुंतला और इतने शक्तिशाली पुत्र को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया? The answer is reputation. तो यहाँ पे इसलिए इनकार किया अपनी इज्जत की खातिर। Because they were not known by the citizens, he was thinking if he accepted them, the citizens would find fault with him, and then his reputation would be spoiled. क्योंकि प्रजा को पता नहीं था कि ये राजा की संतानें हैं या पत्नी हैं, तो उन्होंने कहा यदि मैं इनको स्वीकार कर लूँगा तो जनता प्रजा की निगाह में मेरी इज्जत गिर जाएगी। We have the example of King Rama, Ramachandra, the Supreme Lord. When he was traveling through his kingdom, he heard one member of the citizens speaking to his wife in a very strong way. तो राजा रामचंद्र का उदाहरण हमें प्राप्त है। जब वे अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि उनकी प्रजा में से एक नागरिक अपनी पत्नी से बहुत जोर से बात कर रहा था। Man was chastising his wife. He said, "You were out all night. I don't know where you were. Now you're coming back, and you want me to accept you? You are unchaste." तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि रात भर तुम बाहर थी, मुझे पता नहीं तुम कहाँ थी, तो अब तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं स्वीकार कर लूँ, तुम पतिव्रता नहीं हो।
I'm not like King Ram, who accepted his wife Sita back after being with another man. मैं कोई राम थोड़ी हूँ, राजा राम की तरह कि अपनी पत्नी इतने दिन दूसरे के यहाँ पे थी फिर भी उसको स्वीकार कर लूँ. When King Ram heard that, when Lord Ramachandra heard that, he was very thoughtful, thinking, now they are criticizing me. और राजा रामचंद्र ने ये बात सुन ली तो वो काफ़ी विचारशील हो गए, बोले कि अब तो ये लोग मेरी निंदा कर रहे हैं. And Sita was pure, she had proved that. लेकिन सीता मैया तो शुद्ध थी और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया था. She went through the fire test. After the battle of Lanka, when Sita was again free from the hands of Ravana was killed and the armies had won. She came all dressed up, all ready to again be with her husband after being away. And he said, "You're unchaste. I can't accept you." तो सीता देवी अग्नि परीक्षा से गुजरी थी. हम जानते हैं कि जब युद्ध संपन्न हुआ था, रावण मारा गया और फिर सीता जी जो हैं राम भगवान के पास आई, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम पतिव्रता नहीं हो उस समय. And he said, "You can go wherever you want to go, but I am finished with you." उन्होंने कहा जहाँ तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन हमारा बीच का रिश्ता अब खत्म. She called Lakshman, "Prepare a fire." तो उन्होंने सीता मैया ने लक्ष्मण को बुलाया, बोले अग्नि की वेदी तैयार, अग्नि तैयार करो, मतलब चिता. Lakshman didn't want to do it. लक्ष्मण ये करना नहीं चाहते थे. Ram looked at him. When Ram looked at him, he understood. He didn't want to do it, but he did it. So he made this blazing fire. तो भगवान राम ने उनकी ओर देखा और लक्ष्मण समझ गए. फिर उन्होंने जो है दहकती हुई अग्नि कैसे तैयार की. And in the midst of a large assembly of officers and generals of the monkey army, along with Sita, Ram, Lakshman, Hanuman, Vibhishan, and many, many other persons, with her mind fixed on the lotus feet of Ram, without the slightest bit of fear, she walked right into that fire. तो उस समय बहुत बड़ी लोगों के बीच में राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और कई सैन्य के बीच में उन्होंने भगवान रामचंद्र के चरण कमलों पे अपना ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी डर के सीता मैया आग में प्रविष्ट हो गई. And Ram was like not the slightest bit moved by her mind. और भगवान रामचंद्र उनको कोई चिंता ही नहीं थी जैसे. And everyone was shocked. How could Ram allow this? सब आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे राम जी जो हैं ऐसी चीज होने दे सकते हैं. श्री राधा मदन मोहन की जय. But Ram's mind was fixed. He didn't even show the slightest bit of motion. अगर राम जी का मन तो स्थिर था, उन्होंने इतनी भी भावना प्रदर्शित नहीं की जब सीता मैया अग्नि में प्रविष्ट हुई तब. But the fire proved to be the test. लेकिन ये अग्नि जो है ये एक परीक्षा के रूप में आई. And then the fire died down, and Agni, the fire god, was escorting Sita out of the fire to prove that she is pure, chaste. She never even slightly even showed Ravana even the slightest amount of attention. Yeah. तो उस समय सीता देवी जो है अग्नि से फिर निकल के आ गई और इस तरह सिद्ध हुआ कि वो बिल्कुल एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री हैं. But now he goes back to the kingdom. Sita's there, and everyone is happy. Bart comes back, and the kingdom is going on. The citizens are joyful. And now he hears this low-class person chastising his wife, saying, "I'm not like Ram." तो उस समय फिर वो राज्य में आ गई. राज्य चल रहा है अच्छे से और रामचंद्र राजा बन गए, प्रजा सभी खुशी है. लेकिन उस समय भगवान रामचंद्र सुनते हैं कि ये एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहा है कि मैं तो राम की तरह नहीं हूँ. Reputation of a person in power
is everything about their value. What is their reputation? जब कोई व्यक्ति किसी पद पे स्थापित होता है तो उस पद की गरिमा उसकी बनी रहे, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए यही है। And people will look for faults. और लोग जो हैं उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, कुछ दोष ढूंढेंगे। Because the nature of the material world is based on envy. भौतिक जगत का स्वभाव ही यही है कि ये ईर्ष्या पे आधारित जगत है। The people are envious of powerful people. जिन लोगों के पास शक्ति है दूसरे लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। But those in position must make sure that there's not the slightest bit of criticism on their reputation. लेकिन जो लोग पद पे स्थापित हैं उन्हें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनके पद पे कोई कलंक न लगे। Then they will not have the allegiance of their followers. वरना वो उस पद पे रहने लायक नहीं रहेंगे। Even if someone does something a little bit outside of the standard, but then comes back to the standard, still people remember that little deviation. यदि कोई अपने पद से थोड़ी देर के लिए भी च्युत हो जाता है और फिर वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, लेकिन लोग याद रखेंगे कि इसके साथ ये गड़बड़ हुई थी। Although a person has repented and came back to the standard they were before, still people like to remember that deviation. यदि कोई थोड़ा विचलित हो गया लेकिन पछतावा करके वापस सामान्य स्थिति में स्थापित हो जाता है, लेकिन लोग याद रखेंगे कि ये विचलित हो गया था उस समय। And for the small-minded, that becomes the character description. और फिर वो छोटी गलती जो है वो चरित्रहीनता का दोष लेके आती है। So therefore, here we see Maharaj Dushmanta. He was thinking, the citizens don't know her. How can I accept her? They will find fault with me. तो यहाँ महाराज दुश्मन भी यही सोचते हैं कि नागरिकों को तो पता नहीं है, तो मैं इनको स्वीकार क्यों करूं? करूंगा तो लोग ये सब दोष ढूंढेंगे मुझ में। And as they say, dishonor is worse than death. ऐसे कहा जाता है कि अपमान जो है मृत्यु से भी Particularly for a Kshatriya. विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए। Krishna criticized Arjuna. कृष्ण ने अर्जुन की आलोचना की for not performing his duty or refusing to perform his duty. कि आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो या उसे करने से मना कर रहे हो। You may have many good reasons why you shouldn't fight, and all of those reasons are in line with religious principles. But I'm telling you, you fight. आप बहुत सारे कारण दे रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूं, हो सकता है वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कारण सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको युद्ध करना चाहिए। And if you refuse to act as one of duty, then you will be criticized for that. और यदि आप इसे करने से मना करेंगे तो आपकी आलोचना की जाएगी, लोग निंदा करेंगे, And that'll be worse than death for you. और आपके लिए ये मृत्यु से भी कष्टदायी होगा। So you see how, especially for the Kshatriya race, they want to keep that impeccable character. तो विशेष रूप से क्षत्रिय हैं वो जो अपना बेदाग चरित्र बना के रखना चाहते हैं। When Draupadi was doing her Swayamvara, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था and many of the kings were coming to compete for Draupadi as their wife, तो बहुत सारे राजा आ रहे थे प्रतियोगिता में कि द्रौपदी हमारी पत्नी बने। Draupadi saw that Karna was coming for the competition, द्रौपदी ने देखा कि कर्ण भी उस प्रतियोगिता में आए हैं, and she knew Karna was more powerful than Arjuna, and he would win. और द्रौपदी जानती थी कि कर्ण जो है अर्जुन से अधिक शक्तिशाली था और वो जीत जाएगा। She already fixed her mind on Arjuna. लेकिन द्रौपदी का मन तो जो है अर्जुन पे था। So she said, we cannot let a carpenter into the assembly of Kshatriyas. तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने कहा कि हम क्षत्रियों की सभा में किसी और व्यक्ति को आने नहीं दे सकते हैं। He was actually the son of Kunti. वास्तव में कर्ण कुंती पुत्र थे। He was a Kshatriya. क्षत्रिय ही थे वो भी। But Kunti was not married at the time, and she had conceived a child
by the arrangement of the sun god. लेकिन कुंती उस समय शादीशुदा नहीं थी और सूर्य देव के कारण जो है उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। She kept her virginity. तो उन्होंने अपना सतीत्व तो बनाए रखा था, That was the arrangement of the sun god. लेकिन ये जो संतान हुई थी कर्ण, ये सूर्यदेव के आयोजन से हुई But थी। other people would not understand. लेकिन बाकी लोग तो उसको समझ नहीं पाएंगे। And how would she explain it? कैसे वो द्रौपदी दूसरों को समझाती? So she let the son go. तो उन्होंने उस पुत्र को छोड़ दिया। She put him in a little basket and put him on the river, and he went floating down the river. एक छोटी टोकरी में बच्चे को रख दिया और नदी में उसको बहा दिया। And then Adidev, or Adirata, I think his name was, he was a carpenter, and he saw this child, and so he thought, oh, a beautiful child. We need a child. So he picked up the child, brought it home to his wife, and they raised him. So Karna was seen as to be a carpenter, raised in a Sudra family. तो फिर आदिरथ का नाम था, एक बड़ा ही थे, तो उनको वो पुत्र प्राप्त हुआ बहते बहते। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा सुंदर है और हमें तो पुत्र की आवश्यकता है। तो उन्होंने जाके अपनी पत्नी को उसको सौंप दिया और फिर शूद्र पुत्र के रूप में जो है कर्ण बड़े हुए। So though he was a Kshatriya, he had a reputation. He had two reputations. For some saw him as a Kshatriya and some as a carpenter. तो इस तरह से हालांकि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी दो पहचान हो गई। कुछ लोग क्षत्रिय के रूप में देखते, कुछ कारपेंटर के रूप में। And therefore he was criticized. और इस तरह से द्रौपदी उस समय आलोचना की उनकी। Dishonor is worse than death, they say. जैसे कहा जाता है मान जो है मृत्यु से भी कष्टदायी है। But small-minded people will always find fault. तो कुछ लोग जो हैं इस तरह दूसरों में दोष ढूंढते हैं, Especially in Kali Yuga. विशेष रूप से कलयुग में ये आम बात है। This age is an ocean of faults. दोषों का महासागर है ये युग। And if you can tear someone else down, you feel good. और यदि आप किसी और की आलोचना करते तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। It makes you feel good to find someone else's mistake or some apparent bad quality. तो किसी का दोष ढूंढने में या किसी का बाह्य रूप से कोई बुरा गुण है, वो जब हम ढूंढते हैं तो हमको थोड़ी अच्छा खुशी होती है। Bhakti Vinod Thakur, he writes one song. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गान लिखा है। What's that first word? I can't think of the first word of the song. Sade pape rate nahi opu yerole sam. What is the first? Amara jivan, sade pape rate nahi opu yerole sa. My life, so sinful. Sade pape rate, so sinful. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमारा जीवन सदा पापेरत नहीं को पुण्य लेश। मेरा जीवन पापमय कर्मों से युक्त है, हमेशा ही पाप कर्म में मैं लगा हुआ हूँ। And in the song, he's describing what he feels is his character. और वो गान में बता रहे हैं कि वो कैसे अनुभव करते हैं अपने चरित्र को। But it's not his character. लेकिन उनका जो चरित्र है वो तो बहुत अच्छा है। He's a pure Mahabhagavat. वो तो शुद्ध महाभागवत स्तर के भक्त हैं। But the quality of a great soul is they don't think they're a great soul. लेकिन महान आत्मा की गुण क्या है कि वो सोचते नहीं कि मैं महाआत्मा हूँ। So in one part of the song he says, when I see someone happy, I feel unhappy. And when I see somebody unhappy, I feel happy. तो उस गान के एक भाग में वो कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कोई खुश है तो मैं दुख अनुभव करता हूँ, जब देखता हूँ कोई दुखी है तो मुझे प्रसन्नता होती है। And these are the qualities of the age of Kali. और कलयुग के यही गुण हैं कलयुग के लोगों में। It says a Vaishnava is just the opposite. लेकिन ऐसा कहते हैं कि वैष्णव जो है उसका आचरण इसके बिल्कुल विपरीत है। When a Vaishnava sees someone happy, they share that happiness. जब वैष्णव देखते हैं कि कोई खुश है तो प्रसन्न है, तो वैष्णव भी उस प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं। And when they see someone unhappy, they think, how can I relieve that unhappiness?
जब कोई देखते हैं कि कोई अप्रसन्न है तो वैष्णव सोचते हैं कैसे इनके दुख को दूर किया जाए। Prabhupada would say, let everyone become happy. प्रभुपाद जी कहते थे कि सभी प्रसन्न रहें। Sarve Sinkentu Bhavanti. Let everybody become happy. सर्वे That's Krishna consciousness. सर्वे सुखिना भवन्तु, सभी प्रसन्न रहें, और यही है कृष्ण भावनामृत। But the way of Kali Yuga is that no matter what you do, there will always find someone who will find fault. लेकिन कलयुग की बात क्या है कि आप जो कुछ भी करें, कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई व्यक्ति जो है आप में दोष ढूंढ ही लेगा। Especially if you're in a position of leadership, people like to find fault. Makes them feel good. विशेष रूप से जब आप किसी नेतृत्वकर्ता की स्थिति में हैं तो लोग आपके अंदर दोष ढूंढ ही लेंगे, भले ही दोष हो ना हो। Lord Shiva, he's Mahadev. शिव जी जो हैं वो तो महादेव हैं। Daksha found fault with Shiva. दक्ष ने उनमें भी दोष ढूंढ लिया। He said, well, you have garlands of skulls around your neck, and you hang around crematoriums, and you're followed by ghosts. He was finding fault with Lord Shiva, but that's Shiva's service. He does that as a service to these low-class people. तो बोले मुंडमाला पहन के रहते हो, शमशान में रहते हो, भूतनाथ हो, भूत आपके साथ चलते हैं, तो इस तरह आलोचना कर। लेकिन शिव जी जो हैं वो कृपालु हैं, वो ये उन लो क्लास लोगों की सेवा के रूप में ये करते हैं। There's no fault in Shiva, but still people will find fault. Even great souls find fault in others. तो हम देखते हैं कि शिव जी में कोई दोष नहीं, लेकिन उनके अंदर भी दोष ढूंढा गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महान व्यक्ति भी दूसरे में दोष ढूंढ लेते हैं। Narada Muni. नारद मुनि। Narada Muni Bhajai Vine Pradhika Ramana Nahamre. He goes everywhere, travels around the universe, playing on his veena. His veena is chanting the holy name of the Lord, and he's bringing the mercy of Lord Narayan to everyone and anyone. तो नारद मुनि भ्रमण करते रहते हैं ब्रह्मांड में, वीणा बजाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, और भगवान की जो कृपा है वो सभी को वितरण करते हुए चलते रहते हैं। Daksha is back again. फिर से दक्ष की वापसी होती है। And he creates 25,000 sons known as the Hayashvas. No, 10,000 sons are known as the Hayashvas. तो दक्ष ने 10,000 पुत्रों को दक्ष के माध्यम 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम था हरिअश्वस कहलाते थे। And he wants them to become progenitors, so they have to get married. So he sends them out to holy places for purification before they enter into the grihastha life. But they meet Narada Muni. तो 10,000 पुत्रों को वो चाहते थे कि ये सब प्रजापति आगे बन के प्रजा सृष्टि करें, तो इसके लिए उनको तपस्या करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए भेजा गया। लेकिन वहाँ पे 10,000 पुत्रों की भेंट हो गई नारद मुनि से। Narada Muni says, you're already in good position, don't change. Just perform some penances and austerities, go to the holy place, and then you can go back home, back to God. What is this grihastha life? तो नारद मुनि Don't waste time. नारद मुनि ने कहा पहले से आप इतनी अच्छी स्थिति में हैं, आप जो है तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए, अपना शुद्धिकरण कीजिए, और फिर भगवत धाम लौट जाइए। ये गृहस्थ जीवन क्या है, इसमें फिर जाएंगे समय नष्ट हो जाएगा। So they listened to Narada, and they didn't go back home. Daksha is thinking, what happened? So then he creates another 10,000 sons called the Shalavas, and sends them out for the same reason as their older brothers. Meets Narada Muni again. Same thing happens. And they give up the idea. तो फिर उन लोगों ने नारद मुनि की बात मान ली, और दक्ष तो सोच रहा है कि क्या हो गया, कोई आया नहीं लौट के। तो फिर उन्होंने 10,000 और पुत्र उत्पन्न किए, और उनका नाम क्या था, शवलाश्व। और फिर उनको भी भेज दिया कि आप भी जाओ, तपस्या करो, फिर आओ, प्रजा को आगे बढ़ाना है। लेकिन उनको भी नारद मुनि से मिलना हो गया, तो वो लोग भी वहीं रह गए। फिर Daksha becomes aware of what's happening, and he gets angry. दक्ष को पता चला कि क्या मामला चल रहा है, तो बहुत गुस्सा हो गए। So this time he created 10,000 girls.
decided that would be easier to work it from the other side around. तो इस बार 10,000 पुत्रियों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि पुत्रियों के माध्यम से फिर संतान सृष्टि करना और ठीक रहेगा। Narada wouldn't do anything with that, so although girls can also become renounced, but it wasn't his business. तो नारद मुनि ने उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया। हालांकि युवतियां भी जो हैं वो वैरागी बन सकती हैं, लेकिन नारद मुनि को उनसे कोई लेना देना नहीं था। So Daksha is really angry. He finds Narada Muni, starts chastising him. तो दक्ष बहुत ही क्रोधित थे, नारद मुनि को ढूंढा और उनको बुरा भला बोलने लग गए। He's saying, you don't even know what you're doing. You're supposed to be a saintly person, and you're interfering with the procreation of the next universe. तो दक्ष कहने लगे कि आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप साधु व्यक्ति हो, आप भजन कीजिए और आप जो है सृष्टि आगे बढ़े उसमें आप समस्या डाल रहे हो। So he starts chastising. तो इस तरह से डांटा नारद मुनि को। Narada Muni doesn't say anything. नारद मुनि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। He could have said something because what he did was in line with religious principles. तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी नारद मुनि ने किया वो तो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे ही किया। He remained quiet. तो वो शांति रहे। Because he wanted Daksha to get rid of his anger. क्योंकि वो चाहते थे कि दक्ष जो है अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकाल ले। He was thinking of the welfare of Daksha. If I don't give chance to let him get rid of his anger on me, then he'll keep that anger and that'll spoil his whole life. क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि दक्ष का भला हो, यदि वो अपना गुस्सा सब बाहर निकाल देंगे तो ठीक रहेगा, अंदर रखेंगे तो फिर उनका जीवन नष्ट होगा। This quality of a great saintly person, they're always thinking of the welfare of even those who act inimical towards them. तो महान आत्मा का ये गुण होता है कि वो हमेशा दूसरों के हित का चिंतन करते हैं, भले ही वो उनके शत्रु क्यों न हो। So then he cursed Narada. तो फिर नारद मुनि को दक्ष ने शाप दे दिया। I curse you, you cannot stay in one place for more than 3 days. तो बोले कि आपको शाप देता हूँ कि 3 दिन से ज्यादा एक जगह नारद मुनि आप नहीं रह पाओगे। So Narada was happy. तो नारद मुनि भी खुश हो गए सुन के। Sometimes the demons, they curse you, and it's like Lord Chaitanya got cursed by one Brahmin. He said, I curse you to never enjoy material happiness. Lord Chaitanya said, thank you. तो कभी कभी इस तरह से जो शाप मिलता है ये वरदान हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी एक ब्राह्मण ने शाप दिया, आप कभी भौतिक भोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा धन्यवाद। Narada gladly accepted the curse. तो नारद जी ने प्रसन्नता से उस शाप को स्वीकार किया दक्ष प्रजापति के। And Srila Prabhupada in the purport described, he said, I have also been cursed by the parents of my disciples. तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि मुझे भी मेरे शिष्यों के जो माता पिता हैं उन्होंने शाप दे दिया है। Therefore I cannot stay in one place for more than 3 days. इसलिए मैं भी 3 से ज्यादा एक जगह पे रह नहीं पाता हूँ। But I want to finish writing my Bhaktivedanta purports and I need to stay in one place. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्ति वेदांत तात्पर्य को संपूर्ण करूँ, तो मुझे एक जगह रहने की जरूरत है। So I'm asking my senior disciples to take up the curse for me. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वरिष्ठ शिष्य मेरा शाप अपने ऊपर ले लें। Therefore all my sannyasis should be constantly traveling. इसलिए मेरे जो सन्यासी शिष्य हैं उनको निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। So I already stayed a week here. So I don't know if I overstood my curse. तो महाराज बता रहे हैं कि मेरे को तो यहाँ 1 हफ्ता हो गया है रहते हुए। So Prabhupada, he makes that statement. So yeah, you'll see that there's always reasons for finding fault with great saintly persons. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साधु व्यक्ति हैं उनके जो शाप होता है वो भी वरदान हो जाते हैं। Or people in powerful positions. या फिर जो लोग पद पे रहते हैं। And there have been many great persons in the material world who had big positions and were very popular amongst millions of people. Something went wrong in their life and
Their whole reputation was changed their whole life. तुम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी बहुत बहुत ऐसे पद पे और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुए हैं जिनके लाखों अनुयायी थे, लेकिन थोड़ा सा गलत हुआ उनके जीवन में और उनकी पूरी इज्जत जाती रही। So Maharaj Dusmanta, of course, the voice in the sky made everything clear. When he heard that, then he accepted Sakuntala and his son. तो महाराज दुष्मंत को जब आकाशवाणी सुनाई दी तो सभी को सब कुछ स्पष्ट हो गया। तब उस समय दुष्मंत ने शकुंतला और उसके पुत्र को स्वीकार कर लिया। Reputation is everything in Krishna consciousness. One should be very careful to act always in the proper way where people will not find fault. तो कृष्ण भावनामृत में भी हमारे लिए जो हमारा आचरण है, जो इज्जत है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आचरण इस तरह होना चाहिए कि लोग हमें दोष न देख पाएं। But still, people will find fault. फिर भी वो तो ढूंढेंगे ही दोष। As soon as you get a position, people will find fault. जैसे ही आपको कोई पोजीशन मिलेगी, लोग आप में दोष ढूंढेंगे। One person, he was finding fault with all kinds of devotees in Iskcon, and he was keeping a big record, like a big book of all the leaders that he thought were finding. So he found fault with me, and he said, I'm preaching to prisoners, and these are bad associations, so that was my fault. तो एक व्यक्ति थे जो इस्कॉन में जितने भी लीडर्स हैं उनका इस तरह रिकॉर्ड रखा रहता है कि इनके अंदर ये दोष है, इनके अंदर दोष है। महाराज बता रहे हैं कि मेरे में भी दोष ढूंढा कि मैं जो है जेल में प्रचार कर रहा हूँ तो असत लोगों का संग हो रहा है। So he considered preaching to people in jail to be wrong. We shouldn't, because they're in jail, they should suffer and they shouldn't get the mercy of Bhagavad Dharma. तो वो ऐसा सोच रहे थे व्यक्ति कि क्योंकि ये लोग जेल में हैं तो बस इनको प्रचार करना गलत है, ये कष्ट भोगते रहें और इन्हें संतों की कृपा ना मिले, ऐसा वो सोच रहे। I mean, people found fault with Prabhupada too, so many times. कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी में भी कई लोगों ने दोष ढूंढा। Just like Prabhupada took issue with this one situation where something happened in Japan that was making our society look bad. तो जापान में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे हमारी संस्था की थोड़ी बदनामी हो रही थी। So one popular person, he was also somewhat of a spiritualist from another movement. He started finding fault with the whole Iskcon body because of this little problem that happened in Japan. तो एक और आध्यात्मवादी थे दूसरे संप्रदाय कहीं के दूसरे, तो वो जो है हमेशा फिर दोष ढूंढने लग गए इस जापान में जो घटना हुई उसको लोग के आलोचना करते थे। So they were telling Prabhupada about this. भक्त लोग बता रहे थे प्रभुपाद को इसके बारे में। And Prabhupada is saying, oh, he's such a pavana. He knows so much. He doesn't see that everywhere around the world we're opening temples, making devotees, writing books and spreading the mercy of Lord Chaitanya. He doesn't see that. All he sees is his little problem in Japan. तो प्रभुपाद जी बोले वो व्यक्ति सही नहीं है, हम इतना मंदिर खोले हैं, इतनी किताबें वितरित हो रही हैं, इतने भक्त बन रहे हैं दुनिया भर में, उसको वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो बस जापान में जो घटना हुई वही दिख रही है। So the moon is giving out so much beautiful light, which is cooling in the hot summer season, and it lights up the sky and makes the sky beautiful. But somebody will say, "Oh, there's some spot on the moon. The moon is impure." हम चांद का उदाहरण देते हैं। चांद जो है पूरे आकाश को प्रकाशित करता है, गर्मी में इतनी शीतल किरणें प्रदान करता है, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता। वो कोई बोले अरे उसमें तो देखो दाग है, दाग। So Chaitanya Mahaprabhu says, I give my full mercy to devotees, followers, disciples who do two things. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कृपा प्रदान करता हूँ उन भक्तों को, उन अनुयायियों को जो दो चीज़ों का अनुसरण करते हैं। One who enthusiastically, eagerly chants the holy names of the Lord, the Hare Krishna mantra. एक जो बहुत ही उत्साह थे, उत्सुकता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं। And one who's adoshadarshi. और दूसरे वो जो अदोषदर्शी हैं। Darshi means seeing. Dosha means faults. One who does not see the faults of others.
दर्शी में मतलब देखना और दोष मतलब गलती। तो जो दोष नहीं देखते हैं दूसरों में वो है अदोषदर्शी। So that's Lord Chaitanya gave that criteria for a real Vaishnava, one who does not see the faults of others. तो ये चैतन्य महाप्रभु ने एक हमारे लिए एक परीक्षा की तरह बनाया कि दूसरों में जो दोष न देखें। But still, we should be very exemplary so people cannot find fault. और साथ में हमारा आचरण भी उस स्तर में होना चाहिए कि लोग दोष न ढूंढें, न देखें। Because this is Kali Yuga and everyone's looking for faults. क्योंकि ये कलयुग है, सभी दूसरों की गलतियां ही ढूंढ रहे हैं। I can name so many incidents, but I don't want to belabor this point too much. तो मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं ही वर्णन कर सकता हूं, लेकिन इस पॉइंट पे हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते। But here, the main point here, and is a very important point, King Dushmanta was concerned about how the citizens would see him if he had accepted his wife and son back. And therefore he understood as a king that would ruin his complete ability to rule properly or effectively. तो राजा दुष्मंत यहाँ मुख्य बात यह है कि राजा दुष्मंत सोच रहे हैं कि जनता मुझे किस तरह से देखेगी यदि मैं इनको स्वीकार कर लूँगा। तो वो सोच रहे हैं कि यदि मैं स्वीकार कर लूँगा तो प्रजा पे शासन करने की जो मेरी जो योग्यता है वो मैं खो दूंगा। So for a person in leadership, reputation is everything. तो जो किसी उच्च पद पे आसीन है, नेतृत्व करता कोई लीडर है, तो उनके लिए उनकी इज्जत सबसे महत्वपूर्ण है। Okay, I'll stop here and see if there's any comments, questions. यहीं विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? Mataji? Yeah. Just gotta bring you the microphone. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for this beautiful class. I have one question, like why women have to always prove their chastity to everyone? Why they have to go through exams? Why do women have to always prove their chastity to everyone? Well, they don't in one sense, and that is if they stay faithful and chaste to their superiors, then by their example, that is the proof. Proof is done by example, not necessarily by words. Words is when people, words are for the ignorant people. But one lives a life in the proper way, then that just like when the sun comes out, the light of the sun is there. If a woman is living according to the principles of chastity, that will be seen automatically, simply by her example. तो प्रश्न ये है कि क्यों हमेशा स्त्रियों को अपने सतीत्व को या अपने पतिव्रता में हूँ इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो महाराज बता रहे हैं कि यदि स्त्री जो है अपने पति के प्रति विश्वसनीय रहे और उनकी सेवा करती रहे तो उस उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो पतिव्रता है। इसमें कोई शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है हर बार। And there's a saying, example is higher than precept. जैसा कहा जाता है कि आचरण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि शब्दों के। Whatever you say is one thing, whatever you do is what will be seen as your character. Your behavior is more important than what you speak. आप जो कहते हैं वो तो एक बात है, लेकिन जो आप करेंगे उसी को आपका चरित्र का पैमाना माना जाएगा। तो जो आप करते हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। So you don't have to prove it to anybody. All you have to do is act accordingly, and that will be appreciated and seen. तो आपको किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है कि जो उस पत्नी के लिए जो धर्म है उसका पालन करते रहें और उससे ही सभी लोग प्रशंसा करेंगे, सराहनीय होगा। Is that okay? Thank you. ठीक है। Any other questions? Yes, cameraman. That's all I know, his name, cameraman.
Vishubha Ananda. Thank you, Maharaj, for the wonderful He class. always looks like he's experiencing Ananda. He looks happy all the time. Maharaj, I had this question that Mahaprabhu says when Vaishnava doesn't see faults in other, but during the course of management or managing the things and different activities, we see faults in different programs and different devotees in the management also sometimes. So how to not see, how to remove that No, filter? that's not fault finding. प्रश्न ये है कि हम कई बार, आपने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जब हम मैनेजमेंट करते हैं, कुछ सेवाएं करते हैं, तो कई कार्यक्रमों में, कई योजनाओं में, कई भक्तों में हमको दोष दिखते ही हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को दूर करें, इसका उपाय क्या है? तो महाराज कहते हैं कि ये दोष देखना नहीं है। That's not fault finding. Just like a guru has to see the faults in his disciple and try to correct that so the disciple can make advancement. The parents have to correct their children when the children are not acting properly. That's for the benefit of the children. जैसे कोई गुरु है, अपने शिष्य में कोई दोष देखते हैं, उनको बताते हैं ताकि शिष्य का उत्थान हो। माता पिता अपने बच्चों में कभी दोष देखते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि वो सुधरें। So one in a position of leadership has to somehow or other see it to make sure things go on nicely, and if there's some fault, that should be corrected, but not as a criticism towards the person, but as a means for carrying on the program. That's all. It's not a criticism. It's just something that shouldn't be there. That's all. तो लीडर को जो है वो दोष देखना इसलिए कभी ज़रूरी होता है कि ताकि वो उसको सुधारें, चीज़ें अच्छे से चल सकें, बल्कि इसको आलोचना के रूप में नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए, लेकिन बल्कि सुधारने के लिए स्थिति को, व्यक्ति को ये कभी कभी आवश्यक है। But you have to know how to do that. लेकिन आपको एक कला सीखनी पड़ेगी कि करना कैसे है इसको। Not like, hey, you rascal, what are you doing? ऐसा नहीं कि अरे बदमाश क्या कर रहे हैं। Don't you know what you're doing is not right? The thing is, when you chastise grown-up people, Prabhupada said they break. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप वरिष्ठ या बुजुर्गों को आप जब डांटते हैं तो वो टूट जाते हैं। When you're dealing with grown-ups, you have to be very sensitive and very careful and speak the correction in such a way that is pleasing, not full of anger or negativity. तो आपको उनसे व्यवहार करते हुए बहुत संवेदनशील होना चाहिए। आपको इस तरह ही सुधार देना चाहिए कि उससे प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा नहीं कि नकारात्मक रूप से हम उनको सुझाव दें। Yeah. So the correction is needed, but how you do it is more important. तो सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार आप किस तरह से उनको देते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। Prabhupada, when Prabhupada was giving one lecture, he was noting the devotees were growing long hair again. तो जब प्रभुपाद एक प्रवचन दे रहे थे तो भक्तों को वो बोल रहे थे कि अपने बाल फिर से क्यों बढ़ा रहे हो, उसके बारे में बोल रहे थे। And Prabhupada said, we are known as shaven-headed, not long-hair-headed. प्रभुपाद जी ने कहा कि हमको लोग जानते हैं कि हम शेवन हेड हैं, लंबे बालों वाले नहीं हैं। But I am an old man and you are a young man. I am not here to chastise you. लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा अब मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आप सब जवान हो, तो मैं यहाँ आपको डांटने के लिए तो हूँ नहीं। And Prabhupada mentions that when you chastise, grown-up people, they can break. अब प्रभुपाद जी ने कहा कि अब जब बड़े लोगों को जब डांटा जाता है तो वो टूट जाते हैं। With children you can get away with that, but not with grown-ups. बच्चों को तो क्या है, डांट फटकार लगा देते हैं, लेकिन बड़ों के साथ ऐसा करना उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। So, satyam priyam, satyam bruyam. तो सत्य कहें और प्रिय कहें। Yeah. Speak truthfully, but speak in a pleasing way. सत्य हमें कहना चाहिए, लेकिन उसको मृदु भाषा में अच्छे शब्दों में कहना चाहिए। So we have to practice that. So sometimes we become
immediately disturbed by the situation and we don't think. So, but that we have to be careful. तो हमें उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी क्या है, हम एकदम ही अपना आपा खो बैठते हैं और हम कुछ सोचते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। Yes, good question there. There's 3 questions. Okay, go ahead. Maharaj, I wanted to ask this question day before yesterday, but it's connected to today's class also. Like many times what happens, devotees have some experience of instruction of a spiritual master in a certain situation. Like one time we went to one place and spiritual master told that you drive fast. So devotees in that city say that Guru Maharaj like fast driving. Right. So like that many times devotees have their own understanding of spiritual master's instructions. Now what happens is when they come together, when spiritual master is not present, there may be clash of understandings. Right. So how to avoid that? That happened with Prabhupada too. Let him speak the तो Bengali. प्रश्न ये है कि जो शिष्य होते हैं जब गुरु उनको उपदेश देते हैं तो उससे वो एक अनुभव अपना या एक मानसिकता बना लेते हैं। जैसे कि हम एक शहर में गए तो गुरु महाराज ने एक शिष्य को कहा गाड़ी तेज चलाओ, तो उस लोग कहते हैं कि गुरु महाराज को तेज गाड़ी चले तो पसंद है। तो इस तरह से जब अलग अलग मानसिकता अलग अलग शिष्यों की बन जाती है तो जब वो आपस में आते हैं तो उनके बीच में मतभेद होते हैं गुरु के आदेश को लेके या किसी कार्य को करने को लेके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? Prabhupada was with a few disciples. He said, "Get me something to drink. I want some lemon drink." So they brought him some 7-Up. तो श्रील प्रभुपाद ऐसी समस्या उनके साथ भी थी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने शिष्यों से कहा कि मुझे कुछ पीना है, कुछ नींबू पानी वगैरह, तो एक शिष्य 7-Up ले आया। And Prabhupada said, "Oh, very nice." He liked it. प्रभुपाद जी ने कहा हाँ अच्छा किया वो उसको। So then, when the devotees around the world heard it, they were ordering cases of 7-Up for every temple. तो जब भक्तों ने बाकी ने सुना कि 7-Up प्रभुपाद ने ली है तो सबने कैरेट मंगा लिए 7-Up के अपने अपने मंदिरों के लिए। When Prabhupada found out about it, he said, "What are they doing? I just drank this 7-Up one time, and now everybody wants to drink it all day." तो प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, मैं थोड़ा एक बार 7-Up थोड़ा सा पिया तो अब ये शिष्य लोग पूरा दिन ही 7-Up। What great men do, common men follow in their footsteps. तो महान व्यक्ति जो आचरण करते हैं तो सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। Shiva smokes ganja, right? शिव जी जैसे गांजा पीते हैं। Yeah, Krishna dances with many people's wives. कृष्ण जो है अलग दूसरों की पत्नी के साथ नृत्य करते हैं। But that doesn't mean you should do it. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। But your point is clear. Time and circumstance. Sometimes, yeah, an instruction is given, but it applies to time, place, and circumstance. तो आपका पॉइंट ठीक है, कभी कभी कोई उपदेश दिया जाता है लेकिन उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार लागू करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। So you have to just correct that when it comes up. That's all you can do is try to correct it. तो आप इतना कर सकते हैं कि जब ऐसी कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। There was one veterinarian. He was teaching his disciple how to do veterinarian work. तो एक कोई व्यक्ति पशु चिकित्सा के बारे में अपने गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे पशु चिकित्सा कैसे करनी है। So there was one horse. He had a big lump in his throat. तो एक जो है घोड़ा था तो उसके जो है बहुत एक गांठ थी अपने गर्दन में। The veterinarian asked for a hammer. So and he started hitting the horse and where the lump was, and after a while the lump was gone and the horse was fine. तो फिर क्या है कि जो ठीक करने वाले ने जो है हथौड़ा मंगाया तो हथौड़े से ऐसे ऐसे उसको मारा तो जब वो हटा दिया तो घोड़ा एकदम ठीक हो गया। So his shiksha, his disciples watching that, his student. So now he becomes a veterinarian, and the horse comes in with a lump in his throat. So he picks up a hammer and starts beating, and the horse is going wild.
तो उसके बाद जो है फिर वो शिष्य देख रहे थे ऐसा चल रहा है, तो वो भी चिकित्सक बन गए। तो वो चिकित्सक बन गए तो घोड़ा आया उनके पास भी, उसको समस्या थी, तो वो हथौड़े से उसको मारने लगे और फिर घोड़ा जो है And पागल हो गया। his teacher finds out and he starts chastening him. What are you doing? You know, you're trying to kill the horse. He said, I'm just doing the same thing I saw you do. तो शिक्षक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो आप? वो घोड़ा मर जाएगा। बोले, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया है। So the teacher said, that horse had a watermelon stuck in his throat and I was breaking the watermelon out so he could swallow it. तो वो बोले कि वो जो घोड़ा था ना उसके गले में वो फंस गया था तरबूज, तो मैं तरबूज को मार रहा था, तरबूज टूट जाए तो अंदर चला जाए। So the student seeing, well, there's a horse with a lump, so I just take a hammer and I smash it, you know. तो लेकिन विद्यार्थी सोचा कि ये भी घोड़ा उसी तरह दिख रहा है, तो चलो हथौड़े से इसको भी ठीक कर देते हैं। So I should drive fast all the time. तो ऐसा नहीं कि हम गाड़ी हमेशा ही तेज चलानी। Guru's instructions, drive fast. गुरु ने आदेश दिया है गाड़ी तेज चलानी। No matter where you are, just drive fast. कहीं भी हो बस तेज ही चलना है अपने को, ऐसा नहीं है। Then I'm a good disciple of my guru because I know what pleases him. ऐसा नहीं सच, मैं अपने गुरु का अच्छा शिष्य हूँ, मैं जानता हूँ कैसे प्रसन्न होंगे। This is foolishness. ये मूर्खता है, Ignorance. So things are done according to time and place, but unless people explain, because when a great person does something, people take it as a standard. तो इस तरह हमें उपदेश को देश का वर्ष के अनुसार उसको समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, महान व्यक्ति जो आचरण करते हैं सभी लोग उन्हीं का अनुसरण, वो एक सिद्धांत बन जाता है। Prabhupada said one has to know the difference between a principle and a detail. तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह बताया कि हमें एक तो सिद्धांत और फिर उसका जो विस्तार है दोनों को समझना चाहिए, प्रिंसिपल और डिटेल। A principle is something you can't change. सिद्धांत ऐसी वस्तु है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। A detail is time, place and circumstance. और जो उसका जो विस्तार है वो है कि उसको किस तरह लागू करना है देश काल परिस्थिति के So अनुसार। you're dealing with a detail, that's all. तो आप जो बता रहे हैं वो डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं। So it takes intelligence to understand the difference between a detail and a principle. तो इसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है कि हम सिद्धांत और उसका जो विस्तार है उसको हम समझ सकें। Just like the principle is to chant Hare Krishna 16 rounds a day. That's a principle. You can't change that. तो प्रिंसिपल ये है कि आपको 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इसको तो आप बदल सकते ही नहीं है। But where you chant or when you chant, that's a detail. लेकिन आप कब जप करेंगे, कहाँ करेंगे, ये डिटेल है। Details are adjustable, principles are not. डिटेल्स को हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर, सिद्धांत प्रिंसिपल को एडजस्ट नहीं कर सकते। So going fast means we're late. We need to get it. We need to get there. So that was using a certain intelligence to, make the service effective. तो जैसे कहा गया कि तेज गाड़ी चलाओ, तो हो सकता है कहीं लेट हो रहे हैं, उस प्रोग्राम पहुंचना है, इसलिए ऐसा कहा गया। तो हमें उस तरह बुद्धि का उपयोग करके चलाना चाहिए गाड़ी कि भाई हम उस सेवा को कर सके। तो ये एक कहने का उद्देश्य है। But if you go fast, sometimes you get a ticket. लेकिन यदि आप इस तरह हमेशा गाड़ी चलाएंगे तेज तो कभी चालान कट सकता है। Guru Maharaj said I should go fast, but I got a ticket. I guess Guru Maharaj should pay for the ticket. गुरु महाराज ने कहा गाड़ी तेज चलाओ, अभी चालान कट गया तो गुरुदेव को ही चालान चुकाना चाहिए। It's called neophyte. ये कनिष्ठ का लक्षण है। Neophyte means those who like to fight. कनिष्ठ मतलब, नियोफाइट मतलब जो फाइट करना पसंद करते हैं। Neo means new and new kinds of fights. Always trying to think of a new way to fight. Neophyte. नियो मतलब नई नई तरह की, और फाइट्स युद्ध, नए नए तरह की लड़ाइयाँ करते हैं। That's a play on words, so don't repeat me on that one, or else I'll get in trouble for it. Another question somewhere?
Give one to the ladies this time. Over here, we'll go back to the ladies and come back to the men after. Hare Krishna Maharaj. In Kali Yuga, we are conditioned to find faults in everyone. Because of that, sometimes we also find faults in devotees, which is a very big offense. So, how to overcome this old habit? इस तरह बताया है कि कलयुग दोषों का महासागर है और हम सभी में दोष ढूंढते हैं, तो कई बार हमारे अंदर भक्तों में भी हम दोष ढूंढते हैं, तो कैसे इस पुरानी आदत से छूटें कैसे? When you see faults, as soon as you see faults, start looking for the good qualities immediately. महाराज बता रहे हैं कि जैसे ही यदि आप दोष अगर देख रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उनके अंदर अच्छे गुण हम देखें, प्रयास करें. It's normal to see faults. दोष देखना तो क्या है, एक सामान्य बात ही है. But it's not normal to broadcast things. लेकिन उसको हम प्रसारण करें उसका, ये सामान्य नहीं है. So when you see something so fault, look for the good qualities in that same person and focus on the good qualities. तो यदि हमको थोड़ा किसी के अंदर दोष दिखता है तो हमें उस व्यक्ति के अंदर गुण देखने का प्रयास करना चाहिए और उस पर ध्यान लगाना चाहिए. I don't know the Sanskrit, but there's a progression of understanding. There's 4 categories that people see people in 4 different ways. तो इस तरह 4 कैटेगरी हैं कि 4 प्रकार से लोग दूसरों को देखते हैं. You have the Daksha, who sees faults even when there's not faults. पहले तो दक्ष की कैटेगरी हो गई, जैसे जहाँ दोष नहीं है वहाँ भी वो दोष देख लेते हैं. And below that is those who see faults and good qualities side by side, but focus on the good qualities. दूसरे उससे नीचे वो हैं जो दोष भी देखेंगे गुण भी देखेंगे, लेकिन ध्यान अपना गुणों पे लगाते हैं. And those who see faults, the next one down is, this is even higher. They see a person's faults as potential good qualities. उससे ऊपर वो हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर दोष है तो फिर भी देखते हैं कि ये एक गुण में बदल सकता है या ये गुण के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है. It's like a person may be a little bit passionate, so that may be seen as a a fault, but because they work hard, that's the good quality. जैसे किसी के अंदर रजोगुणी व्यक्ति है तो हम देख सकते हैं ये दोष है, रजोगुणी है, लेकिन रजोगुणी होने के कारण वो बहुत सेवा करते हैं, तो ये एक अच्छे गुण के रूप में देखा जा सकता है. And the highest is one who never sees faults at all. और सबसे फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट जो है वो ये है कि वो किसी के अंदर दोष दर्शन नहीं करते हैं. So we're usually on that second category. We see faults, but we can also see good qualities side by side. तो हम जो है उस स्तर में है कि हम दोष तो देखते हैं लेकिन साथ में गुण भी साथ में देखते हैं. Just like you see a fault in a devotee, जैसे मान लीजिए एक भक्त में आपने कोई दोष देखा, but he's a devotee or she's a devotee. That's their good quality. They've dedicated their life to serving the Lord. That's a very rare and very good quality. So you focus on that. लेकिन वो भक्त है, वो उसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, ये बहुत दुर्लभ और बहुत ही अच्छा गुण है, तो हमें उसको भी विचार करना चाहिए. That's a prime example. ये एक जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है. So look for the good qualities. तो अच्छे गुण देखने का हम प्रयास करें. Prabhupada said, become like a bee and not like a fly. प्रभुपाद जी ने कहा आप मधुमक्खी बनिए, मक्खी मत बनिए. I'm not so good at making flies, but anyway. But in other words, a bee goes for the honey, fly goes for the stool. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मधुमक्खी जो है वो शहद को चुनती है और जो कीड़ा है वो जो है मल के ऊपर जाता है. The swan goes in very celestial, beautiful places of clear water, and the crow goes for the garbage. हंस जो है जलाशयों से भरे हुए बहुत सुंदर स्थानों पे जाता है और कौवा जो है वो कचरे के पात्र पे जाता है. Different kinds of birds, different kinds of animals. Even you'll see in every species there are opposites, even in the species. अलग अलग पक्षी, अलग अलग पशु हैं, तो आप योनियों में भी देखेंगे तो योनियों में भी विपरीत विपरीत स्वभाव देखने को मिलते हैं. So just look for the good qualities. That's all.
then the faults go away immediately. तो इस तरह आप हमेशा अच्छे गुण देखने का प्रयास कीजिए. If you do that, you'll be successful. यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे. Anything else? Oh yeah, we had some more questions over here. Did you forget your question? It's been so long. Okay. Thank you, Maharaj, for your nice class. As you mentioned one point that Draupadi said about the Karna, that she understood that Karna is more powerful than Arjuna. But I heard in Mahabharata that after Draupadi, Arjuna wins Draupadi, then there is a war, and Arjun defeated all the other kings. So also after the Virat Agyatbas, the last day Arjun defeated all the Kauravas. Yeah. So how to understand this point? प्रश्न ये है कि आपने बताया कि कर्ण जो है अर्जुन से शक्तिशाली था, इसलिए द्रौपदी ने कर्ण को भाग ही नहीं लेने दिया स्वयंवर में. लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन जब स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया तो सभी ने आक्रमण किया, अर्जुन ने सभी को हरा दिया, और उसके बाद अज्ञातवास के जो आखिरी वर्ष था उसमें बहुत सारे कौरव युद्ध करने आए थे, उन सभी को हरा दिया. तो हम कैसे समझें कि कर्ण अर्जुन ज़्यादा शक्तिशाली है? ये प्रश्न है प्रभु जी. Well, the answer is in the last verse of the Bhagavad Gita. इसका उत्तर जो है भगवत गीता के आखिरी श्लोक में दिया है. Wherever there is Krishna, the Yogeshwara Krishna. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, wherever is Arjuna, the supreme archer, there will automatically be victory, extraordinary power. What are the other? Opulence. 4 good qualities are mentioned. So that verse answers your question, because Arjuna was connected directly with Krishna. He could do things and defeat both Karna and Bhishma Dev also. Bhishma Dev was undefeatable, but only by the arrangement of Krishna was Bhishma Dev defeated. तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो भगवद गीता का आखिरी श्लोक में दिया गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर. जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ पे 4 चीज़ें होंगी. वहीं पे ऐश्वर्य होगा, वहीं पे अविश्वसनीय विशेष शक्ति होगी, वहीं पे जो है नीति होगी, वहीं पे विजय भी होगी. तो इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के साथ में थे, इसलिए वो न केवल कर्ण को बल्कि भीष्मदेव को भी हरा पाए. भीष्मदेव तो हारने वाले थे ही नहीं, कृष्ण थे अर्जुन के साथ, इसलिए हार पाए वो. That's why Arjuna chose Krishna instead of Krishna's army, because he knew just by being connected with Krishna, he would automatically be victorious. And Krishna didn't even fight; he was just on the chariot. तो इस तरह से अर्जुन ने इसलिए कृष्ण को चुना क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण की सेना हमारे पास ना हो, कृष्ण हमारे पास है तो हम ही विजयी होंगे, भले ही वो रथ क्यों ना चलाएं. So a devotee becomes empowered by the presence of the Lord. तो जब भगवान उपस्थित होते हैं तो भक्त शक्ति प्राप्त करता है भगवान की उपस्थिति. Krishna is there, a devotee, even an insignificant or a devotee doesn't have many good qualities. If Krishna is with them, they can conquer the world. तो हो सकता है भक्त में कोई एक भी अच्छा गुण नहीं है, लेकिन यदि भगवान उसके साथ हैं तो वो पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर सकता है. The power is Krishna. कृष्ण के द्वारा उसको शक्ति मिलती है, ये कृष्ण की शक्ति है. Krishna Shakti Vivana Head Tad Bhavartanam. कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन. Krishna Shakti. कृष्ण की शक्ति है ये. Question? Okay.
You happy with that? ठीक है, आप खुश हैं उत्तर से? Okay, thank you. धन्यवाद। Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, my question is, actually I born in Punjab, so there, Punjab. You're born in Punjab. Yes. So I live there, and there is a Sikh Dharam is followed there. Is it So what? A Sikh. Yeah, more so. Yeah. So no, means I don't have problem with that, but when they talk about when we discuss with friends or the followers of that religion, so as the today's discussion is regarding the fault finding, so they find faults in the Lord, and when we and connected in the base in the Iskcon, so we generally say the nearby peoples they also and say means they said that okay, this is they are doing something bad or like that. Means I also heard like practically one woman was there, that was old lady, and he say that these people are making, like we use the word that mind brainwashing, like kind of thing they use that word. So these kind of people means my question is that they ask that question, they say bad things, so we should correct them, or we should just ignore them. प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं पंजाब में मेरा जन्म हुआ है, तो वहाँ पे सिख धर्म फॉलो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो चर्चा करते हैं तो हमारे भगवान की निंदा करते हैं कई बार। जैसे उनका अनुभव बता रहे हैं कि वो बेस में रहते थे, पड़ोसी लोग बोलते थे अरे ये सब लोग गलत कुछ कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि इन लोग का ब्रेन वॉश हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें उन लोगों को सुधारना चाहिए, या कैसा हमारा उत्तर होना चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? You can do you can go either way depending on the circumstance. आप दोनों ही कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, शांत रह सकते हैं, निर्भर करता है परिस्थिति पे। Sometimes you have to correct, not because they won't be corrected, but other people who will hear, they will understand what is the right understanding. तो कई बार आपको उनको सुधारना होता है। ऐसा नहीं कि इसलिए कि वो सुधरेंगे, बल्कि इसलिए कि जो आसपास जो लोग और सुन रहे हैं वो सही समझ प्राप्त कर पाएं। So sometimes you do have to make some correction. तो कभी-कभी आपको कुछ सुधार करना पड़ता है उनमें। But generally you avoid them. लेकिन साधारण सिद्धांत है कि उनकी उपेक्षा करना ही अच्छा है। Because they want you to say something so they can say something more. आप क्यों कुछ और ज़्यादा बोलें ताकि फिर उनको और बोलने का मौका मिलेगा उसके बाद। A critic, when he's criticizing you, you just ignore them, they get tired and then they stop. कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा है तो आप उसकी उपेक्षा करते रहेंगे तो वो थक जाएगा। Yeah. I get emails, I just send them to spam, that's all. जैसे कोई ऐसे मेल आते हैं ना, हम उनको स्पैम में डाल देते हैं, तो इससे। Yeah, so the idea is better to avoid if you can. That would be the main way to deal with it. But in certain circumstances, when there are innocent people involved, you can say something so they won't be misunderstood, they won't get the wrong impression, and sometimes you have to speak like that. Speak what is actually the truth. सबसे अच्छा तो है कि हम उनकी उपेक्षा कर दें, तो वही अच्छा है। लेकिन कभी-कभी जब और लोग भी उस घटना में इन्वॉल्व हैं तो हमें फिर सत्य बोलना पड़ता है, ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी समझ खराब ना हो, वो सही समझ को प्राप्त कर पाएं। So you have to see the situation. Every situation may be a little different. तो आपको परिस्थिति विचार करना पड़ेगा, परिस्थिति अलग-अलग हो सकती है। But generally you avoid. लेकिन साधारणतः आप उपेक्षा करें तो अच्छा है। Because it just wastes your time. क्योंकि उससे आपका समय नष्ट ही होगा। Any questions? I think that's all. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Radha Madan Mohan ki jai. हरे कृष्णा।
So we are very grateful to His Holiness Chandramauli Swami Guru Maharaj. He very kindly gave us his most valuable association in last 1 week or so. And especially, how did you like the Kirtans of Maharaj? Uh, Many devotees shared that when first day Maharaj came, we arranged the Vyasasan here. And when Maharaj told to keep the asan in front of Shri Radha Madan Mohan, then they remembered Guru Maharaj. And when Maharaj started to chant and he involved in dancing with the devotees, then it was felt that whole temple was dancing. Isn't it? So it's not my feeling, many devotees shared, and it's my feeling also, obviously. So devotees used to wait when Maharaj will come and we will dance with Maharaj. So we are very grateful, and he especially had Bhakti Charu Swami disciples meet when their devotees shared their feelings, and they got solace by sharing their heart with Maharaj. And Maharaj is always very much extending to answer the questions of the devotees. So we are very grateful to Maharaj and beg for his blessings so that we can follow the instructions of Srila Prabhupada and serve our Gurudev as per his instructions. And we request Maharaj to please come again and again to bless us. We really need his mercy, his physical association a lot, and his wonderful kirtans. So we express our heartfelt gratitude to Maharaj by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And I really want to personally thank all of the devotees for their enthusiasm and for their association, especially in helping me do what I have to do. There was so much support, so much help, so much nice prasad. Everything was ideal. I came into the spiritual world. Yeah. I felt like that here, and I think obviously I was thinking, oh, all glories to Bhakti Charu Maharaj. He has created such a wonderful sangha of devotees. And anyone who's coming into this sangha, they also feel that mercy, that energy, that enthusiasm. तो महाराज बता रहे हैं कि विशेष रूप से मैं सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके उत्साहपूर्ण तरीके से भाग लेने के लिए और अपना संग प्रदान करने के लिए। और महाराज बता रहे हैं विशेष रूप से मुझे वो सारा सपोर्ट दिया गया जो मुझे बहुत आवश्यकता थी बहुत सारे कार्यों करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, और जो प्रसाद है वो बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं आध्यात्मिक जगत में आ गया हूँ। और ये सब मुझे इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि यहाँ पे भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी ने जो वातावरण जो यहाँ पे निर्मित किया है, तो कोई भी इस वातावरण में आएगा तो आध्यात्मिक रूप से वो सरचार्ज हो जाएगा। So I'm really grateful for all your association and all the kindness you gave me when I was here. It was really more than I could really appreciate. It was just so nice. Thank you. तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने आपका संग प्रदान किया। मैं अब बहुत प्रशंसा करता हूँ आपकी इसके लिए। That was from everyone, not just some devotees, but mostly everyone. It was just a wonderful experience just being here. Thank you. तो सभी भक्तों के साथ, हर भक्त को महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ यहाँ पे रहना बहुत अद्भुत अनुभव रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। And I even got used to the cold weather. अभी ठंडे मौसम की भी आदत पड़ गई मुझे यहाँ पे रहते हुए। That's just when I get used to it, I have to go back to the warm weather now. So. तो अभी फिर मैं गर्म मौसम जाऊंगा तो वहाँ की आदत डालनी पड़ेगी। I have a disciple. She loves cold weather. एक शिष्य है, उसे ठंडा मौसम बहुत पसंद है। And we're in the same place sometimes, and it's hot and she's suffering. When it's cold, I'm suffering. So we're never on the same page. So I feel sorry for her when it's warm.
You don't have to translate that. That was just a side comment, that's all. Yeah. So thank you, though. Well, I mean, I'm really grateful for all your association and your enthusiasm in kirtan. I didn't do much. All I do is just open my mouth and everybody hits the ceiling. It's just like, so they say when you come, if you're trying to start a fire and the wood is wet, it's very hard to get a fire going. But when the wood is dry, you immediately touch it to the wood and the wood becomes like a blazing fire. So you're all like dry wood here. I didn't have to do anything. Your enthusiasm and your dedication to your Guru Maharaj is amazing, really amazing. तो महाराज कह रहे हैं कि आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से जब मैं कीर्तन में यहाँ आता था तो आप सभी का जो नृत्य था वो बहुत ही अद्भुत था। महाराज बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ गाया, मैंने केवल गाया, लेकिन आप सभी ने इतने अच्छे से कीर्तन किया। महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जो लकड़ी गीली होती है तो उसमें आग लगाना बहुत कठिन है, लेकिन जब लकड़ी सूखी है तो उसमें जरा चिंगारी दो, दहकती अग्नि बदल जाएगी। तो आप सभी का जो आपके गुरु महाराज के प्रति जो समर्पण है और जो सेवा भाव है, कीर्तन के प्रति जो उत्साह है, वो बहुत ही अद्भुत है। Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. Maharaj, devotee wanted to know when you are coming next time. Well, as a traveling preacher, we don't make so many schedules. I can't think that far ahead. Tell him I just say I can't think that far ahead. महाराज बोले कि इतना आगे तक मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कब आऊँगा। But the answer is I'll be back. If you let me. Maharaj, in every year, 17th September, Prabhupada's arrival in America also coincides Bhakti Charu Maharaj Bash Puja. Yes. So, Prabhupada Memorial Festival last year, total 12 Sannyasi Prabhupada disciples came. So, we are requesting you to come this time. It's good because I can celebrate my birthday too, because it's 12 days after your Guru Maharaj's birthday. तो महाराज बोल रहे हैं अच्छा प्रस्ताव दिया कि श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में आप आइए, ताकि उस समय श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में अराइवल और गुरु महाराज की व्यास पूजा दोनों आपके साथ मना पाएं। तो महाराज ने कहा अच्छा होगा, मेरा बर्थडे भी उनके 12 दिन बाद आता है, तो वो भी यहीं मना लेंगे। Hare Krishna. Thank you. That's a good time to come. Yeah. Yeah. September is a good time. Yeah. All right. I'll write that down. महाराज ने बोला मैं ध्यान रखूंगा, सितंबर में आऊंगा। हरि बोल। Man proposes, God disposes. हम इच्छा करते हैं, भगवान उसे पूरी करते हैं। I'll try. Try hard. प्रयास करूंगा आने के लिए। हरि बोल। No doubt. कोई इसमें संदेह नहीं है, मैं आना चाहता हूँ। Vyasadeva, he tells me all the nice stories. I learned so many stories from him. व्यासदेव, आपका नाम बोला। व्यासदेव प्रभु ने मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई और मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। Tell me so many stories I didn't even know. It's really nice. बहुत सारी कहानियां उन्होंने सुनाई जो मैंने याद भी नहीं इतनी सुनाई। He's a good preacher, but he doesn't preach. अच्छे प्रचारक हैं वो, प्रचार करना चाहिए। He's got to preach more. मुझको भी प्रचार किया। Yeah, so it's been
a learning experience for me too. I learned a lot. तो यहाँ पे मेरे लिए भी एक सीखने का अनुभव अच्छा रहा. And one thing I really was happy for, really was happy. My greatest happiness is when I go to a lot of places, we do kirtans, we can't find good mridanga players. We got some good mridanga players here. And they were always there every kirtan. So that was like my greatest happiness. तो एक चीज जो मुझे बहुत 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 यहाँ पे मुझे प्रसन्नता हुई कि यहाँ पे मैं कहीं और जाता हूँ तो कीर्तन करता हूँ, अच्छे मृदंग प्लेयर नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छे मृदंग प्लेयर मिले और वो हर समय कीर्तन करने के लिए उपस्थित थे. But the real quality of these mridanga players, as opposed to the other ones, is the other ones get tired and they quit. But these guys don't get tired. They don't quit. They're like got all this shakti. तो वास्तव में एक मृदंग प्लेयरों का गुण ये है, कई बार एक थक जाता दूसरा सपोर्ट करता है, लेकिन ये कभी थकते ही नहीं है, ये बजाते ही रहते हैं. Because I'm famous for burning out mridanga players. महाराज बोल रहे हैं कि मैं प्रसिद्ध हूँ कि मृदंग प्लेयर जो है परेशान हो जाते हैं, मतलब बजाते बजाते. But I couldn't burn these guys out. These guys were impossible. They were, you know, the more you turn it up, the higher they went. You know what I'm saying? तो लेकिन ये मृदंग प्लेयर को परेशान नहीं कर पाया. ये जैसे ही मैं कीर्तन बढ़ा था तो ये भी मृदंग की ताल बढ़ा देते थे. I never had that experience, so thank you. ऐसा अनुभव पहले नहीं मिला. धन्यवाद. रीवो. कौन है वो? विभोर प्रभु और गौरांग मनोहर प्रभु. Both of them, they're like a team. रीवो. And as Prabhupada said, Bhakti Vinod Thakur said, Mridanga makes the kirtan. जैसे शिल प्रभुपाद शिल भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, मृदंग से ही क्या है कीर्तन जमता है. Because if the mridangas don't follow the leader, then the kirtan goes all over the place, you know. It's like, well, where are we going? You know. तो लीडर कीर्तन करे, मृदंग उसके अनुसार न बजे तो फिर कीर्तन पूरा गड़बड़ हो जाता है. But not only that is quality of a good mridanga player, they know how to follow the lead. तो न केवल वो अच्छे मृदंग प्लेयर हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि कैसे लीडर को फॉलो करना है. Sometimes you get these mridanga players who are really good, but they decide to show off how good they are. कभी कभी ऐसे मृदंग प्लेयर आपको मिल जाते हैं, अच्छे तो हैं वो, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ. And then you're wondering where's the kirtan going? It's just like, whoa. तो कीर्तन कहीं चल रहा है और मृदंग कहीं चल रहा है. These boys have been trained up perfectly. They follow perfectly, really. And they were always smiling. तो ये जो बालक हैं, बहुत अच्छे से इनको प्रशिक्षण मिला है, बहुत अच्छे से, और साथ में हमेशा मुस्कुराते रहते थे. They weren't like, you know, they were smiling. ऐसा मुंह नहीं था, मुस्कुरा रहे थे प्रसन्नता से. Maharaj, at the age of 4 and 5, from that time they are playing mridanga. At the age of the 4 and 5 years old, from that time they are playing mridanga. Yeah. Coming to the temple. Now you're 25, you can go to 45 and 55 and 75. तो महाराज बोल रहे हैं कि 4-5 साल की उम्र से ये मृदंग बजा रहे हैं, सीख रहे हैं और बजा रहे हैं. तो महाराज बोले अभी 4-5 साल से 25 पे आ गए, तो आप इस तरह 45, 65, 75 तक चलते रहिए. हरि वाह. Thank you to all the devotees. And the ladies were very enthusiastic in kirtan and also asked so many nice questions. I really appreciate it. I even said I said, the ladies here are really Krishna conscious. Somebody said, you're right. तो विशेष सभी का धन्यवाद है, और विशेष रूप से माताओं का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि कीर्तन में बहुत उत्साह से उन्होंने भाग लिया और बहुत प्रश्न भी पूछे. तो वाकई मुझे महसूस हुआ कि यहाँ माताएं जो हैं वो कृष्ण भावना भावित हैं.
मैंने किसी से कहा भी तो उन्होंने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं. And last and not least is my translator. Great job. तो अंत में कहूँगा, लेकिन कम नहीं, हमारे जो अनुवादक हैं उन्होंने अच्छा काम किया. I called him Shrutidara. And then I found out Maharaj also called him Shrutidara. So I was following in his footsteps. And now he doesn't want to translate anymore. जो अनुवादक है वो श्रुतिधर है, भक्ति चैतन्य महाराज भी इस तरह श्रुतिधर थे. He did a wonderful job. Sometimes I just go on and I forget the translators here. You know. Still he remembers everything. तो अच्छी उन्होंने सेवा की. कई बार मैं जो है, महाराज बोल रहे हैं कि मैं बोलते बोलते भूल जाता था कि अनुवाद चल रहा है, तो फिर लेकिन वो फिर उसको दोहरा देते थे अच्छे से. So next time he'll give the class and I'll translate. तो अगली बार वो क्लास में मैं अनुवाद करूँ महाराज. But I won't be as good though. So thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki जय. ये झूलने चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी. Samaveda Bhakti Vrinda ki jai.